Welcome to this lecture of calculus. In this present lecture, we shall study some properties related to the geometry of curves, and our topic for the present lecture shall be curvature and radius of curvature. So first of all, we define what we mean by curvature. So this is the definition. The curvature of a curve is defined as the rate of bending of a curve at a fixed or at a given point. So this is how the curvature of a curve is defined at a particular point. तो इसका मतलब ये है कि हमें देखना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व कितनी बेंड होती है। तो अगर वो ज़्यादा बेंड होगी तो हम कहेंगे उसका कर्वेचर वहाँ पे ज़्यादा है, अगर वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी तो हम कहेंगे उसका कर्वेचर अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा है। Now suppose here we take some examples. Like suppose we draw an ellipse like this. We will represent some points on the ellipse. So first let's represent a point like this, which we call the point P here. And similarly we will take one more point, a point Q here. So we shall take out this point P and the point which is here, and similarly point Q which is here. तो अब अगर यहाँ पे हम point P को नोट करेंगे इस ellipse पे, तो हम देख सकते हैं कि इस point P पे जो ellipse की curve है, it bends too quickly as compared to ये कितना bend होता है at the point Q. तो point P पे ellipse ज़्यादा bend होता है और point Q पे ellipse कम bend होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट P पे इस इलिप्स का कर्वेचर ज़्यादा है और पॉइंट Q पे इस इलिप्स का कर्वेचर कम है। And accordingly, suppose if we draw, similarly we draw another picture here. So let's think of this thing as a circle. तो इस सर्कल के लिए हम देख सकते हैं कि ये सर्कल हर पॉइंट पे सेम बेंड होता है. So if we take any point on this circle, suppose we have a point here which we shall suppose call P. जितना फास्ट ये यहाँ पे बेंड होता है उतना ही फास्ट ये किसी भी दूसरे पॉइंट Q पे बेंड हो जाएगा. And suppose if we take point R here, तो हर पॉइंट P होगा, Q होगा, R होगा, तो ये सर्कल हर पॉइंट पे सेम रेट से बेंड हो जाता है. So therefore we can call इस सर्कल का हर पॉइंट पे सेम रेडियस है, और we can say the circle has a constant radius at every point. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कर्वेचर किस चीज़ को हम कहते हैं. सो कर्वेचर इज जस्ट द रेट एट व्हिच अ कर्व बेंड्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो अब हम इस लेक्चर में ये समझने की कोशिश करेंगे और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कर्व का कर्वेचर कितना है. तो उसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि एक गिवन कर्व को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम यूजुअली कर्व को तीन डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज, जिसको हम लिख सकते हैं सपोज इम्प्लिसिट फॉर्म और द एक्सप्लिसिट फॉर्म. सो हम यहाँ पे वो दोनों फॉर्म लिख लेते हैं. सो एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व. जो एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व होती है वहाँ पे यूजुअली इस तरह से लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, या हम एक इम्प्लिसिट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. तो इस चीज़ को हम कहेंगे एक्सप्लिसिट फॉर्म, इस चीज़ को हम कहेंगे इम्प्लिसिट फॉर्म. तो इन दोनों के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम यहाँ पे भी y को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, लाइक y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स भी बना सकते हैं इसी तरह से. तो इस तरीके अगर हमें कर्व इस तरह से दी होगी तो हम कर्वेचर एक गिवन फार्मूला से कंप्यूट कर सकते हैं. नाउ द सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कर्व इज पैरामीट्रिक फॉर्म. तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हम एक गिवन कर्व को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज इफ वी हैव कर्व y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से. सपोज x इज इक्वल एक्स ऑफ t and another equation y is equal to y of t. So that means we actually introduce third new variable that is t, जिसको हम पैरामीटर कहते हैं. तो हम गिवन कर्व को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज पोलर फॉर्म. तो हम एक गिवन कर्व को पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी रिप्रेजेंटेशन यूजुअली इस तरह से होती है r is equal to f of theta, while r is the distance of a particular point from the origin and theta is the angle that it makes with the positive direction of x-axis. Now in all of these different forms of representation of a curve, we shall mention the formula for evaluating the curvature, but before that we shall write down a notation as how do we denote the curve. So we have a notation here. The curvature of a point, the curvature of the curve at a point P, at any point P is denoted by, this is the Greek letter which we read as kappa. So kappa denotes the curvature of the curve at any point P. Now let's write down the formula for finding the curvature in each of these different ways of representing the curve. The first way of representing the curve are the Cartesian coordinate system. So this is the Cartesian coordinate system. So यहाँ पे हमारी given curve होगी, given a curve y is equal to f of x. Then the curvature is
then the curvature is given by which is denoted as kappa as we have earlier mentioned. This is defined as the second derivative of y with respect to x. You can see it is y double dash of x whole divided by 1 plus y dash whole square whole power 3 divided by 2. So this is the formula for finding the curvature of the curve at any point x when the given curve is given in the form y is equal to f. Now similarly, we may have a curve given in the parametric form. So we have a parametric representation of a curve. Suppose we are given a curve x is equal to x of t and y is represented as y equal to y of t. Then the curvature is given by, again we shall denote it by the same kappa. And now in this case, this is denoted as x dot y double dot. So now here this x dot actually denotes the derivative of x with respect to t, and y double dot denotes the derivative of y with respect to t, actually the second derivative of y with respect to t, minus then y dot, which is the first derivative of y with respect to t, multiplied by second derivative of x with respect to t, whole divided by, this is x dot square plus y dot square whole power 3 divided by 2. So why this x dot, x double dot and y dot comma y double dot denote the first and second derivatives of x of t and y of t with respect to t. Now before moving towards the example, we shall also mention the formula when we have the curve in the polar form. Now given a curve, suppose r is equal to f of theta in polar form. So this is the polar representation of a curve. Then the curvature is kappa equal to, this is r square minus twice r dash whole square, then minus r into r double dash whole divided by r square plus r dash square whole power 3 divided by 2, while this r dash r double dash denote the first and second derivatives of r, denote the derivatives of r in fact with respect to 2. So now let's have a brief look into these four formulas again. Now the first formula is when we are given the given curve in the Cartesian form, तो हम कर्वेचर निकालते हैं इस फॉर्मूला से, which is y double dash of x divided by 1 plus y dash whole square power 3 by 2. So in fact now the curvature cannot be negative, तो हम usually यहाँ पे फिर मॉड्यूलस लेते हैं, so that the curvature is always positive. Similarly, हम जब equation होगी in the parametric form, then we again take this as a modulus of this thing. So this is x dot y double dot minus y dot x double dot divided by x dot square plus y dot square power 3 by 2, while these dots denote the first and the second derivatives of x and y with respect to t. And similarly, in the case when the curve is given in the polar form, then we write the curvature as r square minus twice r dash square minus r into r double dash divided by r square plus r dash square power 3 by 2. और यहाँ पे ये जो r dash है, it is the first derivative of r with respect to theta. Second double dash is the second derivative of r with respect to theta. Now first we take the example, find the curvature of, we take the equation of parabola. So suppose y is equal to x square at suppose x is equal to 0 and suppose x is equal to 1. तो हम दो पॉइंट्स पे इसका कर्वेचर इवैल्यूएट करेंगे. But before evaluating the curvature, we will try to draw the figure of this parabola also. So suppose these are the coordinate axis. तो फिर जो ये parabola की equation है y equal to x square, इसकी shape कुछ इस तरह से होती है. So it is something like this. So it looks like this. Now the point x equal to 0 is this origin. So we have, this is the point x equal to 0, and suppose this is the point x equal to 1. तो हम इसको ऐसे represent कर सकते हैं. This is x is equal to 0 और यहाँ पे होगा point x is equal to 1. So therefore we can suppose think of this point as 1 comma 1 and we can think of this point as 0 comma 0. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ही इसको नोटिस कर लेंगे कि जो पॉइंट 0 है वहाँ पे ज़्यादा कर्वेचर है पैराबोला को, और जो पॉइंट 1 है वहाँ पे कम कर्वेचर है इस पैराबोला. सो हमें आंसर भी वैसे मिल जाना चाहिए कि 0 के ज़्यादा कर्वेचर होना चाहिए और 1 के ज़्यादा 1 के कम कर्वेचर मिलना चाहिए. So now let's try to do it using these formulas of curvature. So let's take up the solution. So here our given curve is
given y is equal to x square. So then the curve is in the Cartesian form, so therefore we can write down the curvature as kappa is equal to y double dash whole divided by 1 plus y dash whole square whole power 3 divided by 2. और इस पूरे का हमें फिर मॉडल लेना है so that this curve becomes positive. Now let's evaluate these quantities first. So now this y dash, which is equal to obviously 2x, the first derivative of y with respect to x is 2x, and similarly the second derivative of y with respect to x is equal to 2. So अब हम ये सारी चीजें evaluate करेंगे फिर 1 पे भी और 0 पे भी. So therefore curvature is equal to now y double dash जो हम देख सकते हैं यहाँ पे that's equal to whole divided by 1 plus और जो y dash है that's equal to 2x और हमें यहाँ पे होल स्क्वायर करना है होल पावर 3 divided by 2. So this is equal to 2 divided by 1 plus 4x square whole power 3 divided by 2. So therefore this is actually the curvature at any point x. So hence curvature at x equal to 0 is, so that is kappa is equal to, अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू 0 पुट करना है, so we will get 2 divided by 1, so we will obviously get answer 2. And curvature at x equal to 1 is, curvature at x equal to 1 is, अब यहाँ पे हमें x की जगह पे 1 पुट करना है in the given formula for curvature, so therefore we get curvature 2k is equal to 1 2 divided by 1 plus 4, अब x square 1 ही बन जाएगा यहाँ पे, so this power 3 by 2, so this becomes 2 divided by 1 plus 4 is 5 power 3 divided by 2. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, this is equal to 2 divided by 5 root 5. अब इसको हम obviously देख सकते हैं कि curvature at 0 हमें just 2 मिला था और curvature at 1 जो है it is 2 divided by 5 root 5. It's obviously less than 2 क्योंकि यहाँ से हम 2 को कुछ डिवाइड कर रहे हैं with some positive quantity, with some quantity which is bigger than actually 1. तो यहाँ का curvature, so obviously x equal to 1 का जो curvature है it is less than the curvature at x equal to 0. So therefore we have this observation like this, or we can make some reading here. So this is like an observation. So curvature at x equal to 0 जो हमें 2 मिला था it is greater than the curvature at x equal to 1 जो हमने इनफैक्ट पहले ही इस पैराबोला के ग्राफ से ऑब्जर्व किया था कि x equal to 0 पे कम कर्वेचर होगा, सॉरी x equal to 0 पे ज़्यादा कर्वेचर होगा और x equal to 1 पे कम कर्वेचर होगा और हमें एग्जैक्टली आंसर भी वैसे ही मिला. Now let's take up a second exercise. So this is exercise number 2. So now let's again find the curvature of the same parabola, but let's represent this parabola in parametric form. So find the curvature of this x is equal to t, y equal to t square at, suppose t is equal to 0 and t is equal to 1. अब ये भी जो हमने यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ले ली, दिस अगेन एक्चुअली है पैराबोला, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे यहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन में अगर हम t की जगह पे x लिखेंगे वी विल गेट y इक्वल x स्क्वायर, जो एक्चुअली हमने प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किया. इसका कर्वेचर 0 पे 2 है और इसका कर्वेचर 1 पे 2 डिवाइड बाय 5 रूट 5. लेकिन अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने लिखा था इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, तो वो फॉर्मूला यूज करके हमें आंसर वही मिल जाना चाहिए जो हमें प्रीवियस एग्जांपल में मिला था. सो सॉल्यूशन, सो गिवन x is equal to t and y is equal to t square. So then curvature kappa, this is, as we have already know, this is defined as x dot y double dot minus y dot x double dot whole divided by x dot square plus y dot square और नीचे का होल पावर 3 divided by 2 और इस पूरी चीज का हमने मॉडल फिर लेना है. So now let's evaluate these all quantities one by one. So now we have x dot जो हमने डिफाइन किया था फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन अब यहाँ पे जो है x is equal to t, तो इसका पहला डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. And similarly x double dot, so this is the second derivative of x with respect to t, you can see obviously this is equal to 0. And similarly y dot, which is equal to derivative of y with respect to t, and y is equal to t square, so derivative will be equal to 2t. And similarly y double dot, this is equal to second derivative of y with respect to t, so this becomes hence
we can evaluate curvature, which is equal to modulus of now x dot हमने वो यहाँ पे कंप्यूट किया, that's equal to 1. इसको मल्टीप्लाई करना है y डबल डॉट से, and y डबल डॉट is equal to 2. Then minus y dot is equal to t. Then multiply to x double dot, that's equal to 0, whole divided by now x dot square, वो हमें मिल जाएगा 1 square plus y dot square, वो हमें मिलेगा 4t square. अब यहाँ पे करना है पावर 3/2 और इस पूरी चीज़ का मॉडुलस. Now we can simplify this, and this becomes 2 divided by 1 plus 4t square power 3/2. तो अब अगर इसी को हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में किया था, हमें वहाँ भी मिला था 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर पावर 3/2. अब नीचे पैरामीट्रिक फॉर्म में 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4t स्क्वायर पावर 3/2 मिला. अब हमें यहाँ भी t इक्वल 0 पुट करना है, and t इक्वल टू 1 पुट करना है. सो हेंस this curvature at t equal to 0 is equal to 2, and curvature at t equal to 1 is suppose equal to 2 divided by again 1 plus 4 plus 5, so it is 5 power 3/2, जिसको हम फिर से लिख सकते हैं 2 divided by 5√5. तो इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ भी जो हमने पैराबोला को अब रिप्रेजेंट किया था इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, तो हमें सेम कंडीशन मिला जो हमें इसका मिला था when we have represented the same parabola in Cartesian form. Now let's take one example in terms of the polar coordinates and evaluate the curvature of that curve. So this shall be our example number 3. Find the curvature of the cardioid. और cardioid की इक्वेशन इस तरह से दी जाती है, r is equal to a into 1 minus cos theta. R is equal to a into 1 minus cos theta. This is the equation of cardioid, and we will find its curvature at theta is equal to suppose pi. इसके बाद उसका curvature compute करेंगे. So now let's take the solution. So we are given r is equal to a into 1 minus cos theta. So now we can clearly see this is an equation in the polar form. So that then the curvature is, then this curvature, this is defined as r square minus, so this curvature is defined as r square plus twice r dash square minus r into r double dash whole divided by r square plus r dash square whole power 3/2. फिर जो भी यहाँ पे आंसर मिलेगा उसका हमें मॉडुलस करना है, because we just have to keep in mind that curvature is not negative, it's always positive, so it can be even 0. So now let's evaluate the first and the second derivatives of r. So now we have this r dash, which we can take as the derivative of this thing, and derivative of cos we know it is equal to minus sine, so therefore this becomes a sine theta. Similarly, r double dash, now this becomes minus a, so this is equal to a cos theta, because derivative of sine is of cos, so this becomes a cos theta. Since we have to evaluate the curvature at 0, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही r dash और r double dash compute करेंगे at theta. So then at theta is equal to pi, we have r dash is equal to a sin pi, which is equal to 0, and r double dash is equal to a cos pi, and we know that cos pi is equal to minus 1, so therefore this becomes minus. तो इससे हमें थोड़ा आसान हो जाएगा इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना, and at the same time हम ये भी इवेल्युएट करेंगे what is r at theta. Also r at theta equal to pi gives r is equal to a into 1 minus cos pi, but हम जानते हैं cos pi is equal to minus 1, ये बन जाएगा यहाँ पे 2a. So hence the curvature equal to, अब ये सारी चीज़ें हमें गिवन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है. सो दिस मॉडुलस ऑफ, सबसे पहले r स्क्वायर, लेकिन r इज इक्वल टू a, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, देन प्लस now twice, अब r dash इज इक्वल 0, सो ये बन जाएगा twice 0 स्क्वायर, देन माइनस, अब r at a इज इक्वल टू 2a, तो ये 2a हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड r डबल डैश at pi इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये हो गया न्यूमरेटर, and similarly now the denominator. Of r square, now again this becomes 4a square, then plus r dash square, but r dash is equal to 0, so this becomes 0 square, और इस पूरे का पावर है 3/2. Now let's simplify this. This is equal to 4a square plus 2a square, which is equal to 6a square, 4 divided by, और नीचे है 4a square power 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं
4a square power 3/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, we can write 2a, or we can write 2 square a square power 3/2। to simplify it like this is equal to now 6a square divided। अब यहाँ पे जो अंदर स्क्वायर है और बाहर पावर 1/2, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2a power 3। so which we can write as 6a square divided by 8a cube। now cancelling the common factors a and cancelling the common factor 2 from numerator and denominator, this becomes 3 divided by 4a। तो दो a cancel हो जाएंगे and here we remove the factor 2 which is common between 6 and 8। so therefore the curvature at theta equals pi for this chord is 3 divided by 4a। now we shall continue this lecture with one more definition, that is the radius of curvature। radius of curvature की बिल्कुल आसान सी फार्मूला है, if k or kappa is the curvature of a curve at any point p, then radius of curvature is given by this which is denoted as rho is equal to 1 divided by kappa। तो reciprocal of the curvature is actually defined as the radius of curvature। लेकिन अब इससे पहले हम यहाँ पे ये भी समझ लेंगे कि radius of curvature एक्चुअल मतलब होता क्या है। Now let's take one example here। Okay, let's draw a curve like this। So assuming this is our curve। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि अगर हम ये वाला पॉइंट P कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉइंट, अगर यहाँ पे लिए पॉइंट Q, तो पॉइंट P पे कर्वेचर ज़्यादा होगा और पॉइंट Q पे कर्वेचर कम। इसी तरह से अगर हम सपोज पॉइंट Q और पॉइंट R को कंपेयर करेंगे तो R पे कर्वेचर ज़्यादा है और Q पे कर्वेचर कम है। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैसे समझ लेंगे, सपोज लेट्स लुक एट कर्वेचर एट P। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे एक खास तरह का कर्वेचर होगा। सो सपोज इट्स कर्वेचर इज डिनोटेड एज K। अब इसी कर्वेचर के हिसाब से ये कर्वेचर के ज़हन में रख के और कपा ज़हन में रख के हम एक सर्कल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे इस P पॉइंट पे। तो और ये जान के लेंगे कि इस कर्वे जो इस सर्कल हम P पे बना रहे हैं, इस पूरे सर्कल का कर्वेचर हर पॉइंट पे यही कपा है। तो इस सर्कल को हम कहेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ पे पॉइंट P पे कर्वेचर ज़्यादा था तो सर्कल छोटा बन जाएगा, लेकिन अगर हम पॉइंट Q की बात करेंगे वहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो सर्कल बन जाएगा वो थोड़ा सा इस तरह से बड़ा बन जाएगा। तो this circle which is touching this curve at the point Q, अगर इसका कर्वेचर इस सर्कल का कर्वेचर उतना ही होगा जितना इस कर्व का कर्वेचर होगा पॉइंट Q पे, तो इस सर्कल को हम कहेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से हम हर पॉइंट पे सर्कल ऑफ कर्वेचर बना सकते हैं। फिर जो इस सर्कल की रेडियस होती है, दैट रेडियस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। so therefore this will have the center and this will be the radius, so we can call this as radius of curvature। और अब इसके लिए कुछ नया हमें नहीं करना है, बल्कि हमें जस्ट कर्वेचर कंप्यूट करना है एंड रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब हम कुछ सिंपल सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखेंगे कर्वेचर के रिलेटेड। पहली ऑब्जर्वेशन हम लेंगे, कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 0। जो ऑब्वियस है, कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 0, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होगी वो कहीं भी बेंड भी नहीं होती है, सो दैट मींस कर्वेचर इज 0। सेकंड, कर्वेचर ऑफ अ सर्कल इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी सर्कल को किसी भी पॉइंट पे कर्वेचर कंप्यूट करेंगे, अगर हम एक पर्टिकुलर सर्कल को किसी भी पॉइंट पे कर्वेचर कंप्यूट करेंगे तो हर पॉइंट पे सेम कर्वेचर आएगा, दैट इज मीनिंग द सेम कर्वेचर इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब थर्ड सिंपल सी ऑब्जर्वेशन हम लेंगे, a circle with small radius has larger curvature than a circle with bigger radius। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर हम छोटा सर्कल भी बना लेंगे यहाँ पे, so suppose this is circle here, और अगर इसको हम कंपेयर करेंगे बड़े सर्कल के साथ, तो बड़े सर्कल में जो रेट ऑफ बेंडिंग होती है वो कम होती है, लेकिन छोटे सर्कल में जो रेट ऑफ बेंडिंग होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से छोटे सर्कल में ज़्यादा कर्वेचर होगा और बड़े सर्कल में कम कर्वेचर। एंड सिमिलरली अगर हम सपोज इलिप्स की बात करेंगे, अगर इलिप्स लाइक दिस, तो इलिप्स में जो ये गोल्डन पॉइंट सपोज P है और इसी तरह से Q है, इन दोनों पॉइंट्स पे सेम कर्वेचर होगा, लेकिन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पॉइंट R। तो जो इस एक्सट्रीम्स पे जाते हैं P और Q की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम R की तरफ बढ़ेंगे अलॉन्ग द इलिप्स तो R पे कर्वेचर सबसे कम होगा। सो दिस इज हाउ वी define the curvature, define the radius of the curvature, and understand also what we mean circle of the curvature। So here we conclude this lecture।